Hey guys, today we are going to talk about the solid state, and firstly I'm going to cover the brief of what I'm going to discuss today. We're going to talk about the states of matter, then we are going to talk about what are the classification of solids, and then we are going to talk about what are different differences between the two classification types of solids, that is your crystalline solids और amorphous solids, उनके बीच में क्या differences हैं, characteristics के basis पे हम लोग बात करेंगे. उसके बाद हम लोग बात करेंगे अमॉर्फस सॉलिड्स के यूजेस क्या क्या हैं, एंड देन एट द लास्ट वी आर गोइंग टू कवर द टाइप्स ऑफ क्रिस्टलाइन सॉलिड्स बेस्ड, एंड दिस इज बेसिकली विल बी बेस्ड ऑन डिफरेंट व्हाट बेसिस वी आर चूजिंग, उसके बेसिस पे हमारा सारा क्लासिफिकेशन रहेगा. सो स्टार्टिंग ऑफ, फर्स्टली व्हाट आर द डिफरेंट स्टेट्स ऑफ मैटर. आई थिंक दिस इज अ वेरी सिंपल एंड अ वेरी जेनरिक क्वेश्चन टू एनी वन आउट देयर. तो हमारी क्या स्टेट्स ऑफ मैटर रहती हैं? हमारी 3 स्टेट्स ऑफ मैटर रहती हैं जो सबको पता है, सॉलिड्स, लिक्विड्स एंड गैसेस. लेकिन ये डिसाइड कैसे होता है कि कोई भी मैटर है एट अ गिवन टेम्परेचर वो सॉलिड होगा, वो लिक्विड होगा, वो गैस होगा? हाउ डू यू डिसाइड? बेसिकली देयर इज ऑलवेज अ कॉम्पिटिशन ऑफ 2 फैक्टर्स एंड 2 इन्फ्लुएंसेस, एज आई वुड लाइक टू कॉल इट. फर्स्ट इज योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस. These forces, mind you, can be attractive and repulsive. This is the force which exists between the 2 particles. यहाँ पे आपका न्यूटन का 3rd लॉ लगता है, तीसरा लॉ. Every action has an equal and opposite reaction. So every force which is attractive and repulsive is taken care of in intermolecular forces. दूसरी चीज़ आती है आपका थर्मल एनर्जी. What is thermal energy? Thermal energy is, as the name suggests, thermal means temperature. So आपका ये this is the energy which is present or a characteristics of a particle based on its temperature. Energy possessed by a constant particle due to its temperature. So जैसा कि नाम सजेस्ट कर रहा है, टेम्परेचर बढ़ेगा, थर्मल एनर्जी बढ़ेगी. इन दोनों के बीच में कंपटीशन रहता है आपका. सो व्हाट हैपन्स व्हेन इंटरमोलिकुलर फोर्सेस डोमिनेट? ये कब डोमिनेट करेंगी? थर्मल एनर्जी पे एट लो टेम्परेचर्स. जैसे जैसे मेरा टेम्परेचर लो होता जाएगा ये डोमिनेट करेंगे. सो व्हाट हैपन्स इज द स्टेट ऑफ मैटर चेंजेस फ्रॉम गैस टू लिक्विड टू सॉलिड. उल्टा होगा इसका, जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाएंगे हाई टेम्परेचर, उसमें क्या होगा? थर्मल एनर्जी डोमिनेट करेगी आई एम फोर्सेस को. थर्मल एनर्जी, लेट मी पुट इट दिस वे, इट ट्राइज टू ब्रेक द मैटर अपार्ट. वो दूर दूर ले जाना चाहती है पार्टिकल्स को. रिपल्शन है, वो दूर ले जाना चाहते हैं. इंटरमोलिकुलर फोर्सेस पास लाना चाहती हैं. सो इस केस में उल्टा होगा ऑर्डर. मैटर सॉलिड था, वो कन्वर्ट होगा लिक्विड में. कुछ केस में डायरेक्टली गैस भी बन जाता है, जो कि हम कहते हैं सब्लिमेशन. अभी सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से गैस. ये आपका रहता है बिटवीन आपकी थर्मल एनर्जी एंड योर इंटरमोलिकुलर फोर्सेस के इंटरेक्शन के बेसिस पर. ये हमने स्टेट्स ऑफ मैटर कवर किया है. नाउ हियर वी आर गोइंग टू फोकस आवर एनर्जी एंड आवर अटेंशन ऑन सॉलिड्स. ओके, नाउ व्हाट आर सॉलिड्स? Solid is that state of matter which has a definite arrangement. It may be regular or not. It has an arrangement of particles in space such that they do not have any translatory motion. अब मैं translatory motion की बात कर रहा हूँ. Let me put it this way. कोई भी सॉलिड है, फॉर एग्जाम्पल ये सॉलिड है, इसमें पार्टिकल्स दे कैन नॉट जस्ट फ्लो नॉट अलाउड. दे कैन नॉट मूव रैंडमली, दे कैन नॉट चेंज देयर पोजिशन, नॉट अलाउड. ओनली थिंग अलाउड इज वाइब्रेशन. यू हैव स्टडीड वेव्स, सो बेसिकली द पार्टिकल्स कैन ऑस्किलेट अबाउट देयर पोजिशंस. दे कैन जस्ट ऑस्किलेट अबाउट दीज पोजिशंस इन स्पेस. दैट इज द ओनली मोशन दे कैन हैव. That is a definition, a basic definition of solids. Clear? अब आ जाएगी क्लासिफिकेशन.
सॉलिड की क्लासिफिकेशन हम देखें, बेस्ड ऑन दिस अरेंजमेंट वी कैन हैव टू क्लासिफिकेशन. फर्स्ट इज योर crystalline solids, also known as crystals. Okay, next is your amorphous solids. इनका भी नाम है, नाम लिख ही देता हूँ यहाँ पे, pseudo solids. वो क्यों है, और दूसरा नाम है सुपर कूल्ड लिक्विड्स. वाई डू वी कॉल देम दैट, ये मैं अभी आपको एक्सप्लेन करता हूँ इन अ फ्यू मोमेंट्स. नाउ लेट्स गेट बैक इनटू द डेफिनेशन ऑफ दीज. वाई डू वी कॉल क्रिस्टलाइन सॉलिड्स, क्या होते हैं. लेट्स गेट देयर इनटू द डेफिनेशन ऑफ बोथ एक्चुअली. क्रिस्टलाइन on one side and then we have amorphous on the other side. Okay, firstly they have a definite regular three-dimensional arrangement of CP, that is your constant particles in space. This arrangement repeats itself over and over the entire crystal. Okay, this is what this phenomena is called long range order, because the same ordered arrangement is being repeated over a long distance. The entire crystal, पूरे crystal में repeat हो रहा है, इसलिए से होता है long range order. ठीक है, long range order. Amorphous इसका बिल्कुल उल्टा. They have an arrangement. The definite arrangement does not repeat itself over long distances. So basically, they do not. Same definition के आगे do not लगा देंगे. Do not have a regular three-dimensional arrangement of constituent particles in space. The regular arrangement only repeats itself over short distances. थोड़े देर के लिए थोड़ी दूर तक चलती है. Short distances only. Since this was called long range order, this will be called short range order. Fair enough? Clear? After that, examples. Now crystalline solids आपके all metal crystals, diamond, graphite, ionic solids like NaCl, KCl. इसके example, glass, silicon, amorphous. बिकॉज क्वार्ट्ज भी आपका दो तरह का होता है, एक क्रिस्टलाइन एक नॉन क्रिस्टलाइन क्वार्ट्ज. एक आपका, फिर उसके बाद नेक्स्ट आता है ग्राफाइट, सॉरी नॉट ग्राफाइट, ग्राफाइट तो आपका क्रिस्टल था. रबर, प्लास्टिक, ये आपके एग्जाम्पल हो गए एमॉर्फस सॉलिड्स के. अब हम बात करेंगे डिफरेंसेस के ऊपर. देख तो डेफिनेशन हो गई. पहला डिफरेंस तो आपका डेफिनेशन ही है, उनकी ज्योमेट्री. The first topic is geometry. Okay, long range order, the regular arrangement, it repeats itself throughout the crystal. Here short range order. Okay, that's point number one. Next would be melting points.
I'm going to use short forms because easier to explain, and I guess my short forms are easy. If you have any doubt, write it in the comment section and go ahead. So melting points, sharp melting points. यहाँ पूरा लिख दिया मैंने. Sharp melting points. Here they don't have a sharp melting point. They soften over a range of temperature and then melt. क्वेश्चन आता है इनका शार्प मेल्टिंग पॉइंट क्यों है? रीजन यही है, लॉन्ग रेंज ऑर्डर. दैट इज द रीजन. रेगुलर अरेंजमेंट है, पार्टिकल्स एक जगह फिक्स्ड हैं, विच बिकॉज ऑफ विच जब उनकी एनर्जी बढ़ाई जाती है, द थर्मल एनर्जी दैट अफेक्ट्स द एंटायर क्रिस्टल ऑल टुगेदर, एक साथ अफेक्ट आता है. दैट्स व्हाई दे हैव अ शार्प मेल्टिंग पॉइंट. हियर दे डू नॉट हैव दैट अरेंजमेंट. सर्टन पार्टिकल्स दे विल गेट हैव मोर एनर्जी, कुछ पार्टिकल्स की कम एनर्जी होती है, इंक्रीज. सो बेसिकली व्हाट हैपेंस इज दैट दे फर्स्ट सॉफ्टन एंड देन दे मेल्ट. तो जैसे हम आगे बढ़े, जिसकी वजह से इनका नाम होता है स्यूडो सॉलिड्स और सुपर कूल्ड लिक्विड्स. जैसा कि पहले कहा था, आई विल एक्सप्लेन व्हाई दे आर कॉल्ड दिस. बिकॉज दे हैव टेंडेंसी टू फ्लो लाइक लिक्विड्स, बट दे आर नॉट लिक्विड्स. Flow like liquids, but what happens is that because of which they are known as pseudo solids or super cooled liquids, because same. Now example इसका क्या रहेगा? आपके old glass panes होते हैं पुराने buildings में, which are thicker at the bottom and thin at the top. ये क्यों होता है? Because over the period of time with continuous temperature changes, आपकी climate change होता है, temperature change होता है, season change होता है. So what happens is that because of that, they and coupled with their tendency to flow with gravity, they have flown from top to bottom, जिसकी वजह से bottom में थोड़े चौड़े लगते हैं. They are thicker at the bottom, thick, and यहाँ पे thin. Okay, that's why they are also known as pseudo liquids, pseudo solids or super cooled liquids. These are known. This is only characteristic of amorphous solids. This characteristics has been used for making glass. आपने annealing सुना होगा क्लास 10th में. Even in this class you will learn about it, how you make glass. Basically annealing करा जाता है, तो you heat it and then you cool it slowly. So what happens is you change glass and you form glass on this process. Annealing के basis पे आपको different shape में कर सकते हो. You can make them into any shape, bend them into any shape. External force लगा के आप इनकी shape change कर सकते हो. This is because they are pseudo liquids. जैसा बनाओ वैसा बन सकते हैं. ओके, ये आपके नेचर हो गए amorphous solids की. They can be distorted into different shapes. Next characteristics. ये तो हो गई melting points. Next difference आ जाएगा आपका on the basis of isotropy and anisotropy. Let me just write that down. Isotropy and anisotropy. To explain this, I'll use a diagram. जैसा कि हमने बोला, amorphous crystalline solids में regular arrangement है. से दो particles हैं, A और B. हम ज़रा simple रखते हैं, बहुत ही ज़रा difficult नहीं करेंगे. A B A B A B A B. यहाँ पे भी same repeat होगा because regular arrangement है. It repeats itself throughout the crystal. So yeah, say a physical property. When we talk about a physical property, say melting your refractive index है आपके लिए, conductivity है, तो मैंने इस direction में measure किया, direction 1, and then I went to measure along this direction, direction 2. तो direction 1 में मुझे मिला A A A A, direction 2 में मुझे मिला A B A B. So what happens? What does it signify? Different particles in both. यहाँ पे ओनली A टाइप मिला, यहाँ पे A B दोनों मिला, जिसकी वजह से डिफरेंट वैल्यूज कॉरेस्पॉन्डिंग टू एनाइसोट्रॉपी. ये उसकी डेफिनेशन है. When a physical property is measured along two different directions of a crystalline solid, it will produce two different values.
because it encounters different set of particles on different directions. That's why crystalline solids have anisotropy. अब यही हम एमॉर्फस की बात करें. एमॉर्फस के अंदर कोई डेफिनेट रेंज ऑर्डर नहीं है. कभी ए, कभी बी, जो मन में आए मैं लिख सकता हूँ. कुछ भी हो सकता है उसका ऑर्डर. बेसिकली कह सकते हो डिसऑर्डर्ड है. तो जब भी उसको एनकाउंटर करेगा वो सेम प्रॉपर्टी, दोनों में डिफरेंट सेट ऑफ पार्टिकल्स हैं, रैंडम पार्टिकल्स मिलेंगे उसको. दिस कॉरेस्पॉन्ड टू सेम वैल्यू ऑफ दैट फिजिकल प्रॉपर्टी, जो उसकी डेफिनेशन बनी आइसोट्रॉपी. आइसोट्रॉपी क्या हुआ? एनी फिजिकल प्रॉपर्टी लाइक रिफ्रैक्टिव इंडेक्स, कंडक्टिविटी और थर्मल कंडक्टिविटी और electrical conductivity, any one you can take, when measured along different directions of an amorphous solid will produce the same value. Okay, basically it is independent of the direction. तो ये आइसोट्रॉपी होगी इनके लिए. क्लियर? नेक्स्ट टॉपिक वुड बी क्लीवेज. When you want to cut a solid, a crystalline solid, because of its regular arrangement, it can be cleaved into, like I said, cleavage. It can be cleaved into a definite और regular, जैसा कि उसका अरेंजमेंट था वैसा ही उसका एक 3 डायमेंशनल प्लेन की फॉर्म में उसको काटा जा सकता है. इट कैन बी क्लीव्ड इनटू अ डेफिनेट प्लेन्स ऑफ ज्योमेट्री. हम काट के अलग रख सकते हैं और वो ज्योमेट्री स्ट्रॉन्ग, और दे आर बेसिकली वो जो शेप रहेंगी दोनों, दे विल बी क्वाइट, दे हैव अ डेफिनेट प्लेन ऑफ ज्योमेट्री, दे एग्जिस्ट अ प्लेन ऑफ ज्योमेट्री इन क्रिस्टलाइन सॉलिड्स ऑन अकाउंट ऑफ रेगुलर अरेंजमेंट. यही अगर आप यहाँ पे काटना चाहें एमॉर्फस सॉलिड को, it will have, it cannot be cleaved like that. It doesn't have a regular plane of geometry because in accordance with the randomness of the arrangement, therefore it doesn't possess the property of cleavage. नाइफ लेके अगर मैं वहाँ काटूँ यहाँ काटूँ, डिफरेंट रिजल्ट आएगा. कंपैरिजन के लिए आप सोच सकते हैं, एक जगह में चीज़ का ब्लॉक है और एक जगह में वुडन ब्लॉक है. वुडन ब्लॉक यू कैन कट एंड गेट अ रेक्टेंगल your cubical piece, you can cut out of it and get another cube, or you can cut and have a regular plane of geometry. When you cut, you can see the cleavage. It has a definite plane which is existing there. लेकिन चीज़ को काटो वो टेढ़ा मेढ़ा कटेगा हमेशा. These are the properties of your differences between crystalline and amorphous solids. Next, moving on, uses of amorphous solid. Now amorphous solids, as we know, are different kinds of uses in our daily household items. Glass is being used everywhere, in your window panes, in your जो तुम्हारा ग्लास पानी पीने के लिए यूज़ करते हो उसमें भी यूज़ हो रहा है. इट्स बीन यूज इन योर टीवी स्क्रीन्स एवरीवेयर. ग्लास हैज अ लॉट ऑफ यूजेस. सिलिकॉन, आपकी जो आईसी चिप इंटीग्रेटेड सर्किट्स हैं उसमें यूज़ होता है. सोलर सेल्स में यूज़ होता है. इट्स यूज एवरीवेयर. देन यू गॉट रबर, variety of household uses, okay, and even industrial uses. So that's your uses of amorphous solids. Moving on, now next, as a last topic of discussion today, is the classification of crystalline solids on the basis, like I said, the basis is very important, basis of intermolecular force of attraction / repulsion. Okay, so basically it has 4 different kinds: molecular solids, then we have got ionic solids, then we've got metallic, solids,
and last covalent or network solids. Now going on to the first, molecular solids. As the name suggests, the constituent particles are molecules, and the constituent forces will be van der Waals forces. I'm just going to write van der Waal here. Now molecules are basically polar or non-polar. They can be of any type. So because of that, they are further classified into three different parts. That is non-polar molecular solids, polar molecular solids, and your H-bonded molecular solids. Non-polar molecular solids will have like CO2, Cl2, nitrogen. They don't have any polarity, so the only London forces are at work. Okay, dispersion forces or London forces will be operating there. In polar solids like HCl, then you have got HBr. These are the forces I'm talking about all these molecules in the solid state. So in these molecules, you will have dipole-dipole interactions, another part of your van der Waals forces. In H-bonded, there are only three: H2O, NH3, and HF. All in solid state. Water in solid state, ice, solid ammonia, solid HF. They have got H bonds operating there. These are very weak forces, though they have a very low heat of vaporization, low heat of vaporization, fusion. Their melting points are low, very low. Okay, and they don't have any tensile strength. Is also low. Ionic solids. The constant particles of ionic solids are ions. Intermolecular forces would be, as expected, Coulombic or electrostatic force of attraction and repulsion. These are very strong bonds. These are known basically formed by ionic bonds. Now because of this ionic bond, they have a very high heat of vaporization. Also melting point very high. Melting boiling points are very high. They do not conduct electricity. Both of these, they do not conduct electricity in solid state. Whereas ionic solids, they conduct electricity in molten or their aqueous states. Why in molten aqueous states? Because then they will have free moving ions. The particles, the constant particle ions, they are organized in a regular crystal lattice. We're going to talk about this crystal lattice in detail in next section of this chapter. So they are not allowed to move at all when they are in the solid crystal lattice. Then we've got about metallic solids. These are metals. Here we have positively charged kernels immersed in a sea of electrons. These are the negatively charged particles, electrons, present in the valence band of each metal. We're going to discuss in detail in the later part of this chapter. Now these metal ions, or these positively charged kernels means Ke, kernels. The bonds which exist between them are known as metallic bonds. This is also correspond to the intermolecular force. Metallic bonds, these are weak bonds. Compared to ionic bonds, they are weaker. So because of the free moving electrons which are available, they conduct electricity in solid state. That's the speciality. They're also malleable and ductile. These were hard and brittle. They are malleable and ductile. Also, they have a moderate value of vaporization, heat of vaporization, your melting points, fusion, moderate. Not very high, not very low.
This is all due to the strength of their metallic bonds. Examples: all metals. For ionic solids, NaCl, then you have got KCl, then you got Ki, KBr, AgBr. These are all your ionic crystals, ionic solids. They have ionic bonds in them. Now when we talk about covalent or network bond solids, constant particles are atoms of non-metals like carbon, silicon, then you have got boron, something like that. And bonds, or shall I say forces of attraction, would be covalent bonds. Now what happens with these are very special kinds of solids, because what happens, unlike the other parts which we have discussed, here the entire crystal is a one giant molecule. How? Let me give you an example of carbon. Carbon has two allotropic forms, diamond and graphite. In diamond, carbon is sp3 hybridization, so it has a tetrahedron arrangement. In graphite, carbon is sp2 hybridized, so trigonal planar arrangement. Now what happens here, there is a continuous sequence of covalent bonds which exist between diamond. This is one layer I am showing over here. This is just one layer of now behind this there is another layer which has like this. Let it clear. Okay, so this is a whole network solid. It is a never ending system. So what happens in diamond is that because of these strong covalent bonds everywhere, it is very hard, brittle. Diamond is the hardest substance on the planet, non-conductor of electricity or heat, doesn't conduct, very high heat of vaporization and fusion. Because of the strength, because of the continuous sequence of covalent bonds, they have a very high strength. That's why it's very hard. Whereas graphite, now sp2 hybridization, there is one pi electron in there per carbon atom. So each carbon atom is like this, the center of the tetrahedron. Then this becomes another one. Then this, then this. Then we have this. I'm trying to make you a one layer of graphite here. Similarly, another layer is at the bottom. Now you may have noticed that I have left some space in between. That's because the pi bonds are weaker as compared to the sigma bonds. Here all were sigma bonds. Here we have got a pi electron cloud in between. Because of this free electron cloud in between, free electrons, graphite conducts electricity in solid state, unlike its counterpart diamond. It has a moderate, lower heat of vaporization and fusion. It is also hard and brittle, but lesser than diamond. That's the only reason. So with this I am stopping my lecture now. Next time we will discuss in detail about the crystal lattice and the unit cell. So thanking you, take care, be safe, bye bye.